has arrived in the market, the perfect budget phone in India, as well as the perfect competitor of Redmi Note 7 Pro. हे गाइस, मेरा नाम है मृण्मय। आप देख रहे हैं टेक पोस्टमॉर्टम। ये है मेरा Realme 3 Pro के फुल रिव्यू। मैं बात करने जा रहा हूँ Realme 3 Pro के बारे में पूरा डिटेल्स में। आपके मन में जितने भी सारे सवाल हैं, मैं इसका पूरा जवाब देने वाला हूँ। चलिए आज की ऑपरेशन शुरू किया जाए। दिस इज Realme 3 Pro। मैं 1 वीक से इससे यूज़ कर रहा हूँ। This is really a excellent budget phone of 2019 at the first half। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या Realme 3 Pro as good as Redmi Note 7 Pro or even better than Redmi Note 7 Pro? The biggest question ever, right? Is not it? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। I know Realme 3 Pro and Redmi Note 7 Pro both have the sexy gradient finish color back, but Realme 3 Pro में देखने को मिलता है पॉलीकार्बोनेट एक्चुअली प्लास्टिक बॉडी एट द एंड ऑफ द डे। बट Redmi Note 7 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है एक ग्लास बैक विथ कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। सो Redmi Note 7 Pro looks little bit more premium as compared to Realme 3 Pro। अगर मैं पहले बात करता हूँ उसके डिस्प्ले सेगमेंट की, अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्प्ले हियर इज great, it's vibrant and its look it's as good as its the price segment। इसका अंदर देखने को मिल जाता है 6.3 इंच की IPS डिस्प्ले with Corning Gorilla Glass 5 protection। Obviously this is the front of this phone। yeah, Realme 3 Pro के डिस्प्ले Realme 2 Pro से ज़्यादा बेहतर है, कलरफुल और मोर ब्राइट लगता है। ओवरऑल Realme 3 Pro की डिज़ाइन मुझे बहुत यूनिक लगा, क्योंकि इसका अंदर देखने को मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप, कैमरा प्लेसमेंट इज़ गुड इनफ, फिंगरप्रिंट पोजीशन भी अच्छा है। इसका अंदर देखने को मिल जाता है एक ब्लेजिंग फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर एंड इट्स प्रीटी मच एक्यूरेट। इसका अंदर देखने को मिल जाता है एक हेडफोन जैक, ए माइक्रो यूएसबी पोर्ट। ओ रियली, माइक्रो यूएसबी पोर्ट? आई नो लॉट ऑफ यू गाइस आर थिंकिंग माइक्रो यूएसबी पोर्ट तो मुझे पसंद नहीं है। चलो छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इसका अंदर मिलता है 20 वाट 5 वोल्ट 4 एम्पियर वॉक चार्जर 3.0 इनसाइड द बॉक्स। बट माइक्रो यूएसबी पोर्ट का एक दिक्कत ये है, क्योंकि अगर जब कोई पीसी के अंदर से कोई और लैपटॉप के अंदर से कोई डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको थोड़ा बहुत स्पीड में चेंजेस देखने को मिल जाता है। Obviously, Realme 3 Pro will miss the convenience features that USB Type-C offers। Ultimately, Realme 3 Pro डिज़ाइन वाइज बहुत ही कूल फ़ोन लगता है मुझे। Realme 3 Pro के अंदर देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर्स मिड बजट फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 710, जो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है क्या स्नैपड्रैगन 710 स्नैपड्रैगन 675 के अंदर क्या फ़र्क है और कौन सा अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है Realme 3 Pro एंड Redmi Note 7 Pro के बारे में। आप ये देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैं जितने दिनों से इससे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डे टू डे यूजेस, रेगुलर मल्टीटास्किंग लाइक taking photos, taking videos, playing games, etc। ये एक बजट सेगमेंट फ़ोन के लिए बहुत अच्छा काम किया है रियलमी ने। अगर मैं बात करता हूँ इसके बेंचमार्क के हिसाब से बोले तो स्नैपड्रैगन 675 का CPU परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 710 से बहुत बेहतर है, और स्नैपड्रैगन 710 की GPU परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 675 से बहुत अच्छा रहा। आई बिलीव बेंचमार्क स्कोर्स ऑलवेज डज नॉट मैटर। चलिए आप बात करते हो इसके कैमरा सेक्शन के बारे में। इसका अंदर मिल जाता है f1.7 16 मेगापिक्सल सोनी IMX519 सेंसर, जो OnePlus 6 और 6T में भी यूज़ किया गया है। सो Realme 3 Pro परफॉर्म्स ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ फोटोज एंड वीडियोज कैप्चरिंग। ऑब्वियसली इट शुड बी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 के साथ आता है।
Sony IMX519 sensor that uses on OnePlus 60 and OnePlus 6। ये एक अच्छा सेंसर है इस बजट सेगमेंट के लिए, एंड ये प्राइस में तो आप सोचो ही मत। बहुत ही अच्छा काम किया है रियलमी ने। यहाँ पे मैं कुछ फोटोज सैंपल शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इन सब फोटोज की कलर्स बहुत वाइब्रेंट, शार्प एंड डिटेल्स, ऑब्वियसली गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स। इसमें मिल जाता है नाइटस्केप मोड, अच्छा फीचर्स ये है इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। Thousand 1080p video at 30 fps and as well as 60 fps. Most exciting features of this camera is it can take video, super slow motion video up to 960 fps। मुझे लगता है it's a gimmick। I think 120 fps is better working in this camera, and I go choo choo when I'm on the rails. I'm on that train. I got my passengers going insane. It's like we passengers of that propane. I'm screaming fire, 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 flames. Fuck that, ain't a bus pass. I'ma need a dolly with a llama cause a mustache. I'ma need a PCIe if I must blast. I'ma need a PCA if I must blast. CDs how we must clap. Damn it, it's so real, how we must act. There ain't no real words, it's surreal. And that's 4 wheels, and when the Hummer's on 4 wheels. फ्रंट कैमरे के बारे में 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा can take some awesome selfies. The colors are accurate and well detailed and vibrant. Oh, hi there. Let me talk about the big things. Oh, Realme 3 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है ह्यूज 4045 mAh बैटरी। It can take 80 minutes 0 to 100% to full charge with the Vox Charge 3.0. Oh yeah, the battery performance is quite good enough, almost 1.5 a day. इसमें और एक इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है कि इसके अंदर देखने को मिल जाता है स्क्रीन सेवर मोड, मतलब बैटरी सेविंग मोड। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क दिख जाता है। Realme 3 Pro की यूज़र एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो इसमें निकल के आता है ऑब्वियसली ColorOS 6.0 with Android 5 9. ये डेफिनेटली एक कस्टम OS है। I don't like the custom OS or this kinds of OS. I always prefer stock Android. But the ColorOS 6.0 is well balanced and इसका यूज़र इंटरफेस और मतलब बोले तो UI बहुत ही फ्लूइड एंड स्मूथ है। इसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत फ्लूइड एंड स्मूथ मुझे लगा। चलिए आप कुछ मोस्ट कॉमन सवाल के जवाब देते हैं। क्या इसमें eMMC स्टोरेज और UFS स्टोरेज यूज़ किया है? Realme 3 Pro का अंदर मिलता है UFS स्टोरेज। 15,000 के अंदर eMMC स्टोरेज एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता।
वाइड फाइन L1 को सपोर्ट करता है? Yes, it does support wide fine L1 support. You can watch Hotstar and Netflix or other premium video platforms on 1080p or more. Does Realme 3 Pro support camera 2 API? Yes, it does. अगर आप चाहते हो तो आप गूगल कैमरा मॉड यूज़ करके बहुत अच्छे सारे फोटोज खींच सकते हो. इट्स हैसल फ्री.